to be presenting in front of her also. Today's topic that I would be covering is importance of research for pharmacists and how to get your work published. In this presentation, I would be discussing why research has taken so much importance in pharmacy practice, what was the issues, and how it has been resolved. I would be discussing about research process, the normal way and in reality, the benefit of research, publication process, and how to start a publication. And I will present my own case study. For disclosure, I have no actual or potential conflict of interest in relation to this program or presentation. Any information discussed during this presentation have no connection with my current or past institution. It is completely based on my own experience, and I will take the responsibility of any information that is revealed during this presentation. Okay, let's start with a bit of history and what research had with us when, at least when I was growing up, and what was the concern with that thing. So we used to have two types of pharmacists, that is known as academician practicing pharmacist in hospital, that is an academician sort of pharmacist and a practicing pharmacist. They have a particular characteristics those pharmacists had. The academic जिसको हम पढ़ाकू बच्चे भी कहा करते थे या पढ़ाकू बच्चे एक्चुअली इस्तेमाल किया करते थे, academic pharmacist होते थे, उनका एक particular characteristic होता था. They were very studious, but practically weak. They were practically weak. वो dispensing और उसपे थोड़े से कमजोर वो करते थे. They were weak on those things, but very studious. They had an educational tendency towards doing MPhil or PhDs. Their career pathway, what they were looking forward was teaching and research rather than pharmacy practice. में administrative position लेने में they were not so much interested. And then their highlights was research papers. On the other side, we had practicing pharmacists. They were sharp, laborious. They are ready to work hard, put their efforts into the dispensing and other particular ones. Their educational tendency were more towards MBAs rather than professional degrees, rather than doing MPhil or PhD, which is considered as a research degrees. Their career were more towards their career orientation was towards more administrative side. They wanted to become supervisors, they wanted to become managers in those levels, and their highlights were abstract or presentation. Our seniors mean the people from the practicing pharmacists, they were either abstract, they were used to present their abstract in research or in a symposium, or they were only presenting their presentation or their thought process that what they have done. However, there was always an issue, acceptability issue between the academic pharmacist and a practicing pharmacist. They were not ready to accept each other because of various reasons. And this was the bone of contention that we had throughout the time, at least for the last 7 or 8 years. We had this bone of contention. We used to say, "Nahi, aap practicing pharmacist hai, you are an academic pharmacist. Nahi, you cannot work in this hospital." Things like that. Research does not have any value in actual hospital pharmacy domain, and we never used to get benefit. जैसे कि आपको you have a benefit if you are a physician, you have a benefit if you do research, you will get some incentives on those things. But however, in practicing in a hospital pharmacy practice one, the research or anyone would not have any additional benefit at the time. And then suddenly the time changed during Alhamdulillah, during our time also the things changed, and there came a collaborative thing. Uh, Designations such as clinical assistant professor, associate professor, preceptor developed. They were the hybrid of both sort of pharmacists. They were academically strong also, and they were practicing pharmacists were very strong on those things. So we had a hybrid sort of people around those things. They realized that we need a hybrid. We need academic pharmacists also, we need practicing pharmacists also, but we need a hybrid system. And such designation was was born. Uh, it is Alhamdulillah, by the grace of God, in Pakistan also this thought process is reviving, and I see that in many institutions, university also or hospital, we see now such people around. But what is the concern came around? This has created much more requirement for being an expert in the pharmacy practice. इसने और आपकी ना रिक्वायरमेंट बढ़ा दी क्या, if you have to be called as an expert, आपकी रिक्वायरमेंट और बढ़ गई है. पहले हमारे पास होता था, if you are a manager or a director of a well established pharmacy, you would consider an expert of that particular field, or you would be considered as a very strong person and you would be considered as an expert.
हाँ, आप abstract present कर रहे हैं, presentation कर रहे हैं, then you become much more valid person in a pharmacy practice profession. But now, along with all this thing, now you need to become a part of a well-established pharmacy system. To be called an expert, you have to have abstracts and presentation, and now you have to have published paper also. This is now a requirement to be considered to be an expert in pharmacy practice. Now, what is the process? What is the process? Uh, Again, we have to understand in a true base. I am a clinical pharmacist specialist working for a long time, hospital pharmacy also for a long time. I know for a fact that all pharmacists do research every day, every 1.5 hour. Every good pharmacist have to research for some queries that we have to do on those things. But does that research is a research that we are talking about? Now, we know that for administrative issues, for any particular concern, we do our research, we look into different organization, what they are doing, and develop a protocol or a policy. We develop those things. But is this a validated in normal hospital in normal way? What we do, and we used to do that thing that we used to confirm it from the seniors or the outcome of a policy or something. We will use to see the KPI whether is it effective or not. And based on that thing, within our organization, we used to think it's a validated process. And this is how we said. And we said that yes, what we have done is correct. This is how it is being done. It is being done also, and has been carried out in many hospitals. But unfortunately, this is not the way it has to be throughout the world. In the world, if you have to, if a new thing that you have discovered, or a new process that you have aligned or have developed, it has to be evaluated by experts. How you can evaluate, how can it be evaluated? This can be only evaluated through, if it is by published publication, is considered is a huge thing. If a paper is published out there, the thousand of people will read it, and they will give their remarks, and they will talk about it, and whether they will accept it, is whether their model would be accepted on those things. Let me recall. Let me recall a time we did not have journals, many journals of pharmacy practice. Actually, in pharmacy practice, we had pharmacology, we had many others available at the time, but not on pharmacy practice. But recently, in last 10 years, you will see many journals coming out for pharmacy practice, and they are offering. They are not offering data on therapeutics. Also, they are offering administrative research. They are offering quality research. They are offering different pharmacotherapeutic one, clinical pharmacy practice, different things are, educational things are coming out here. But again, whether that particular paper is accepted, whether if it is a validated, whether it can be adopted by other organizations also, that's the thing that we look into. One, what is the benefit of research? The honestly, one of the biggest thing that from my side, I have found benefiting is professional profiling, because it has really helped me out. One, because if you Google also by particular name, and then you search from Pakistan or something, your name rises up. Okay, if you see such Muhammad Amir, Pakistan, okay, because of published paper, because of presentations before of different association, your name come arises, and people come to know that you are the person who is sitting out there in a particular hospital, whether it is far in a remote area or any place where else, they will recognize you. We have different platform of professional profiling also. We have LinkedIn, we have other method also, but not every time people from LinkedIn are being picked up. People from ResearchGate, there are other services also that the people will look into that thing, whether you're considered an expert. For instance, I'm looking for an expert of informatics in Pakistan. How many do you find in that particular one? How many names will rise up? How many, if you will search for a clinical pharmacist in Pakistan, if you will search through it, how many you will find? And then you will, how you will validate, if a person junior 1 year 2 year has written clinical pharmacist and have even published their paper, how will you see that thing? When you will read their paper, you will come to know how expert he is. Then instrumental networking, it's to be honestly, it has, for me, it has helped a lot. People have identified me from various mechanisms, and they have offered jobs because of those things, because they see that yes, there are unique skills
that you have of informatics, of clinical pharmacy, or research, or education, or other things. And because of this networking, you get different opportunities available throughout the, not in Pakistan, I'm talking about throughout the world. For example, if someone has applied in particular one, you can write a connection of that particular one, that I have written this paper, 8 papers I have written, 10 papers I have written. They will show you this is an expert. They have additional skills of writing or research or making an issue one. The lastly is financial benefit. I have got some grants on those things, but I never got it directly to my in my pocket. Unfortunately, I hopefully believe that yes, if we follow this process, we will be benefit, because the principal investigator do get some money on those one when you investigate on the thing. The trend has not yet initiated here. At least in pharmacy practice, I've not heard so many people who have got those financial benefits in Pakistan. I'm not aware of that thing. Might be I would be my knowledge is not so aware, but few of the people would have gotten financial benefit directly, not to the institution, by himself also. If I'm a principal investigator, I will get some benefit from that directly. So this is the three benefits that I believe that anyone who will do research in pharmacy practice will get very strongly on those things. Publication process. It's, to be honestly speaking, it seemed like for the MPhil, PhD, MBA, we write a paper, we write a proposal, we write a synopsis. That synopsis is accepted. That once it is accepted, through which it will be, we'll do the collect. We will collect the data, then analyze it, and then when it is accepted, it will go for publication. This is the same standard method, but unfortunately, in pharmacy practice, many of the research are unintended. We do not plan it. Okay, how we wanted to do something, okay, on this thing, we need to resolve this thing. It's not in a standardized format also at times also, okay. Yes, we have collected data for something else, but some other issues have been resolved from that product. So we do not have a standardized method to do this research. कि पहले आपने प्रपोजल लिखा, आपने प्रपोजल नहीं लिखा होता, हम ब्रेन स्टॉर्मिंग, बेसिकली वी डू अ ब्रेन स्टॉर्मिंग, वी फाइंड अ मेथड, और फिर उस मेथड पे हम एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं, फाइनल स्टडी करना शुरू कर देते हैं. So we do not, unfortunately, we do not have an in pharmacy practice. Usually we do not plan this thing कि हमें ये रिसर्च करनी है. जब वो पूरा डाटा आ जाता है, कलेक्ट हो जाता है, तो उसका कोई एब्स्ट्रैक्ट, वी प्रिपेयर एब्स्ट्रैक्ट एंड शो समवेयर एल्स कि हाँ भाई हमने ये काम किया था. Most of the time it's not publishable also. That is one of the concern. होता ये है कि आपने कोई डाटा किया होता, might be for your institution it would be worthwhile, but would it be worthwhile in for others to read it? I will give you the example. I have read so many papers recently from Pakistan also. अब देखिए हमारे पास पेपर पब्लिश होते हैं इंटरवेंशन के, फार्मेसी इंटरवेंशन के, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन के, और every now and then it's published in local papers. I have not seen for a long time. I have not seen in a very good journal from, at least from Pakistan. I have not seen कि भाई ड्रग इंटरेक्शन के ऊपर वो किया. ये बहुत पुराना हो चुका है. I have seen a lot of paper. अनफॉर्चुनेटली आप उसमें भी देखते हैं, अच्छा ये जो पेपर पब्लिश होते हैं वो अकेडमिकली स्ट्रॉन्ग बंदों ने किया हुआ होता है, बट वी ऑल नो उसमें सबसे टॉप पे जो आता है ना आपका, उसमें एस्प्रिन और क्लोपिडोग्राल का इंटरेक्शन लिखा हुआ होता है कि, और दैट वी ऑल नो दैट इट इज बीइंग यूजुअली गिवन. वो तो आप एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल फंक्शन में वो तो फर्स्ट लाइन थेरेपी है, वो ब्लीडिंग बढ़ रही होती है, मगर आप ओमिप्रोजोल और दूसरों के साथ वो कर रहे होते हैं, बट दिस इज नॉट, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करते. क्लिनिकली इज नॉट सिग्निफिकेंट, यू डू समथिंग एल्स ऑन दैट थिंग, वो सब पे टॉप पे आ रहा होता है कि हाफ ऑफ द पेशेंट होता है. So again, that publication is not considered in many one. हम collaborate नहीं करते, we do not collaborate with many other people. We think that we have to do it within the pharmacy system, because pharmacy practice is administrative, it's clinical, it's IT, informatics. We need to collaborate. जितनी ज्यादा आपके साथ कोलैबोरेशनल वर्क होता है, उतना ही अच्छा पेपर कंसिडर किया जाता है, स्पेशली प्रैक्टिसिंग का. क्योंकि भाई लेट्स सपोज कि आपने कोई आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, आपने कोई EHR के अंदर सिस्टम चेंज किया है या प्रिस्क्राइबिंग में चेंज किया है, you did not do it by yourself. You took the help of IT people, you took the help of clinical people, you took the help of different administrative people.
So you have to indulge with them and give them the credit of that thing, and that makes the paper very strong. I have seen many paper also in recent past that के पूरी pharmacy ने लिखा हुआ है, ये pharmacist, ये pharmacist, ये pharmacist, pharmacist, और वो informatics का paper है. How did he program anything? How did he came to concluded that this is very dated outlook? Yes, he did many of the things, but IT ने भी काम किया हुआ होता है. उसमें कहीं IT का बंदा नहीं होता, ना acknowledgement में होता है, ना उसपे होता है. It's not in the top author's name also. So this creates a issue for publication editor of the one कि भाई ये कैसे खुद ही काम कर लिया. फिर हमारे पास जर्नल नहीं आइडेंटिफाई हो रहे होते कि फार्मेसी प्रैक्टिस के वैसे भी जर्नल बहुत कम होते हैं, बट अगेन व्हेन यू हैव अ फार्मेसी प्रैक्टिस जर्नल तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना हो रहा होता है कि उसको पब्लिशेबल हो, कोलैबोरेटिव वर्क हो और वो जर्नल की एक्सेप्टेबिलिटी हो. अब इंटरनेशनल जर्नल के अंदर इफ यू सेंड लेट्स सपोज इफ आई डू अ रिसर्च टुडे आई विल कलेक्ट अ डाटा कि भाई इंटरवेंशन के कितने ज्यादा ड्रग ड्रग इंटरेक्शन थे मेरे कार्डियक के अंदर, लेट्स सपोज. अब उसके अंदर मैं जाता हूँ तो वो कोई भी इंटरनेशनल बड़ा अच्छा फार्माकोथेरेपी हुआ जो 3 इम्पैक्ट फैक्टर का है या कोई भी इंटरनेशनल जर्नल हुआ, वो नहीं एक्सेप्ट करेगा बिकॉज़ इट्स नॉट वर्थवाइल. एवरीवन नोज़ दैट थिंग. शायद हाँ, मगर इसके लिए आप अगर आप एक लोकल पेपर, पाकिस्तान का लोकल पेपर आप पब्लिश करा रहे होते हैं, यस दैट इज एक्सेप्टेबल ऑन दोज़ थिंग्स. वो एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि वो लोकल पेपर है. शायद लोकल वालों को इंपॉर्टेंस क्रिएट हो जाए उस चीज के ऊपर. ठीक है. अच्छा, हाउ व्हाट इज how can we do that thing? Acha, my request to you as a fellows of pharmacy practice, जब भी कोई भी प्रोजेक्ट इस्तेमाल करें, एंड दैट इज वन ऑफ द मुझे सबसे ज्यादा द कंसर्न रेज होता है, वी डू नॉट मेक अ प्रोजेक्ट प्रपोजल एट ऑल. कोई भी आपका आइडिया आया, आप एक प्रोजेक्ट प्रपोजल लिख लें, चाहे वो एक पेज का क्यों ना हो, लिख मैं यूज देखो ना. सॉरी, इज देयर एनी कंसर्न? आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है. यू कैन कंटिन्यू. Okay, thank you for confirmation. Acha, so my request to you, whenever you start a project, whether it is small or big, write a one-pager project proposal. Project proposal में सिर्फ introduction होता है, आप क्या काम करने वाले होते हैं, 10 लाइनें होती हैं, आपने क्या काम करना है और उसको आप follow कैसे कर रहे हैं. This is a one-pager proposal on that thing. अच्छा, इसमें एक फायदा ये भी होता है, one of the things that happens, because once you say that you are going to publish it, then there are many कंट्रीब्यूटर्स रेज हो जाते हैं कि भाई हमने भी काम किया, हमने भी ये वो चीज की हुई है. तो आपके जब प्रोजेक्ट प्रपोजल होता है तो उसमें पहले ही से लोग आइडेंटिफाई हो जाते हैं, नाम आइडेंटिफाई हो जाते हैं. अब अच्छा, वंस यू हैव डेवलप्ड दैट थिंग, व्हाटएवर द प्रोजेक्ट इज ऑन दैट थिंग, गो फॉर इंटरिम डाटा. इंटरिम डाटा आपने एनालाइज करना होता है कि आपने बीच में कुछ बेहतर हुआ या नहीं हुआ. आपने देखा, जब आपको डाटा की सिग्निफिकेंस शो हो जाए, बिकॉज नॉट एवरी प्रोजेक्ट, नॉट एवरीथिंग इज पब्लिशेबल आल्सो. जब आपको इंटरिम के अंदर पता चलना शुरू हो जाए कि ये डाटा इज वर्थवाइल रीडिंग आल्सो एंड इट कैन बी वैलिडेटेड बाय अदर इंस्टीट्यूशंस आल्सो, डू दैट थिंग. आपने इंटरिम किया, आपको लगा कि ये पब्लिशेबल है, आपने फिर कोलैबोरेट करना शुरू कर दिया. यू स्टार्ट कोलैबोरेटिंग विद डिफरेंट. अच्छा, एक और चीज होती है, मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट आर, दिस इज माय ओन व्यू अगेन, not many pharmacists that I have seen or worked with are very good, I'm saying very good in writing scripts. Not everyone. Few of them, आपको एक दो मिलते हैं हमेशा, बीच में एक कोई मिल जाता है जिसको स्क्रिप्ट लिखना आता है. Not everyone knows how to write, use SPSS or R or Python. Not everyone knows that thing. So what you do, you make your collaboration team. आप टीम बना लेते हैं साथ में, आप उनके साथ कोलैबोरेट करना शुरू कर देते हैं. भाई मैंने पेपर लिख दिया, मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया. So if I will give you this particular thing, can you help me out with this particular one? When you do a collaborative work, इसमें एक तो काम तेजी में भी हो जाता है और much more accuracy से हो जाता है. और फिर आपने कोई एक ऐसा सीनियर बंदा उठाया हुआ होता है, कोलैबोरेट किया होता है, जिससे कोई काम नहीं होता, सिर्फ रिव्यू करना होता है. चाहे वो that would be in your hospital or that would be actually an academician जो आपके साथ यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रहा होता है, जो कि पब्लिश पेपर कर रहा होता है,
वो सिर्फ आपका रिव्यू करके देता है कि हाँ भाई ये आपका पेपर पब्लिशेबल हो रहा है, इस पे क्या गलती हो जाती है। तो ये कोलैबोरेटिव, अच्छा इससे एक फायदा ये होता है कि द एडिटर thinks that yes it is being it is a collaborative work, or since so many people have worked through it is much more acceptable। फिर वो आईटी वाले भी पढ़ेंगे, वो मेडिकल वाले भी पढ़ेंगे, वो दूसरे वाले भी पढ़ते हैं, दूसरे फील्ड के भी पढ़ते हैं उसके ऊपर, दैट इज मच मोर रीडेबल आ जाती है वो उसके ऊपर। हाँ, जैसे ही आपको ये जब कोलैबोरेट हो जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इट इज मैंडेटरी, ईआरसी इज एथिकल रिव्यू कमिटी, मैं बोल apologies for that। एथिकल रिव्यू कमेटी होती है या आईआरसी होती है, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू कमेटी होती है, उससे अपना प्रपोजल एक्सेप्ट करवाना होता है। वी नीड ए नंबर वेदर, अच्छा द गुड पार्ट इज इफ इट इज अ रेट्रोस्पेक्टिव ओल्ड, पुरानी डाटा के ऊपर है या कोई ऐसी चीज डाटा के ऊपर है, तो आपको उसमें से यू डू नॉट नीड टू, यू जस्ट नीड के आप उसको लीव आउट कर लें। उसका एक वर्ड होता है, आई एम फॉरगेटिंग दैट टर्मिनोलॉजी, आई हैव फॉरगॉटन द टर्मिनोलॉजी। अक्सर मेरे पास ईआरसी में अप्रूवल चाहिए होती है, पार्शियल अप्रूवल होती है, आई एम फॉरगेटिंग, तो एक्सक्लूड कर देते हैं उसके ऊपर कि वी डू नॉट नीड अ complete approval for that thing। Half of the project that we do not need ERC approval, तो उससे आप रिस्ट्रेन कर जाते हैं आप, तो ये हो जाते हैं। फिर उस टॉपिक के बारे में पढ़ना शुरू कर दें, उसके डाटा कलेक्ट करें कि दुनिया भर में उस चीज के बारे में क्या हो रहा है, देन यू स्टार्ट राइटिंग अप, तो इस पे काम आपका हो जाता है। दिस इज हाउ यूजुअली आई डू। मेरे पास जितने भी पेपर मैं आपको पब्लिकेशन में जो दिखाऊंगा, इट्स नॉट मोर, इफ मेरे ख्याल से मैं टोटल होंगे अब 11 या 12 होंगे, 12 पेपर मेरे पब्लिश हो चुके होंगे। तो उन 12 पेपर में से आधे उसपे मैं इसी तरह से काम कर रहा होता हूँ, और जबकि मेरे पास जो टोटल नंबर हो चुके, जो अभी डाटा कलेक्ट है वो है तकरीबन 20 से 25 का डाटा है। मैं 20 से 25 में से मैंने सिर्फ 12 पब्लिकेशन की है अब तक। डाटा मेरे पास 25 का पड़ा हुआ है, बट आई हैव ओनली वर्क, क्योंकि मैं उसकी सिग्निफिकेंस होती है, उसकी पर्टिकुलर होती है जिसपे मैं अपना टाइम प्रायोरिटाइज करके डाल सकूँ। ठीक है। How to start a publication? For all those newcomer who wish to have they want to become an expert in their field, in a particular field of pharmacy, informatics, administrative, dispensing, compounding, different other field, administrative one, clinical pharmacy, usually it takes 3 phases। हर किसी के लिए 3 फेज है होता है। एक अर्ली फेज होता है, फिर सेकेंडरी फेज होता है, थर्ड फेज होता है। जब अर्ली फेज के ऊपर होते हैं, दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे, गो फॉर इट। एडिटर, इफ यू सी, ये मैं आपको ये दिखा भी रहा हूँ, अपनी पब्लिकेशन दे रहा हूँ कि लेटर टू एडिटर, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट वन, एक दिन में एक्सेप्ट हो जाता है। मैंने जो पहली दफा जो पहला पेपर लिखा था, द फर्स्ट पेपर दैट आई रोट इट इन दिस नॉट अ पेपर, इट्स अ लेटर ऑफ एडिटर, मुश्किल 500 या 600 वर्ड का था। ये मैंने लिखा था फॉर्म डी पाकिस्तान के ऊपर, एक लिखा था कि फॉर्म डी और पाकिस्तान के अंदर क्या वो होता है, वो होता है ये अमेरिकन जर्नल ऑफ फार्मेसी एजुकेशन, इट्स अ गुड जर्नल। एक दिन में मैंने अभी भेजा, इट के आफ्टर आवर एक्सेप्टेंस आ गई मेरे पास, सिंपल। दूसरा भी मैंने एमबीए कर रहा था, दूसरा प्रोजेक्ट था, उसका लेटर टू एडिटर बना दिया, और फिर तीसरा उसके ऊपर था कि उसके ऊपर थोड़ा सा लंबा वो खींचा, बट देखिए उसपे एक दिन लगा और 5 दिन लगा, बट इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस yes you have the writing skills, you have the things। so what you can do at this time, identify a critical thing, कोई एक खास चीज आपने identify की, you have identified that yes this is a thing that I can write a letter on, small, 1000 वर्ड का, 500 600 वर्ड का, कोई छोटा सा डाटा है जो आपने प्रेजेंट कर दिया। फॉर इंस्टेंस दैट आई हैव आस्क्ड माय वन ऑफ द फार्मासिस्ट कि मैंने कहा है कि रेमडेसिविर के ऊपर एलएफटी डी रेंज होती है, तो उसका डाटा कलेक्ट कर लो, उसके ऊपर लेटर टू एडिटर लिख दो, सिंपल, बहुत ही सिंपल। ये बहुत मुश्किल, एक दिन का भी काम नहीं है। आपने 2 या 3 केसेस उठाए, उसको केस को प्रेजेंट किया, उसको थोड़ा सा उसके फॉर्मेट में देखा, आप लिख दिया उसके ऊपर। सेकंड फेज, अच्छा लेटर हुआ आपके पास, केस स्टडी। हाँ, केस स्टडी साथ तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आसान होती है। इट्स बट माय रिक्वेस्ट टू यू इज, लेटर इज योर इंडिपेंडेंट, आप आराम से लिख सकते हैं। फॉर केस स्टडी माय रिक्वेस्ट टू यू इज दैट collaborate with a physician। Most case studies, if it is of not ADR but if it is something else, you have to have a collaborative work with physician, uski acceptability from the journal is much more higher। ठीक है।
सेकंड फेज आता है जिसमें हम रिव्यू लिखना शुरू करते हैं। एमबीए के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये एमबीए का प्रोजेक्ट था। मगर आप ये सारे जो जर्नल्स हैं, ये सारे जर्नल्स हैं, ये नॉर्मल जर्नल्स हैं। दे आर नॉट impactful journals. They are not with impact factor. I'm not saying it's not a bad journal. I'm saying that it does not have impact. At the time when I published it, it did not have any impact. जब अमेरिकन जर्नल और ये उस पे हुआ था तो उसका इम्पैक्ट फैक्टर 0.8 था। अब वो हो चुका है 1.25 या कुछ इस तरह का हो चुका है। लेटर टू एडिटर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आपने इसके ऊपर नॉर्मल जर्नल से नॉर्मल पे हुआ, इस पे मेरे 25 दिन लगे, किसी में 10 दिन लगे, मगर पब्लिकेशन आपकी हो गई। एंड दिस इज अ टाइम आई स्टार्टेड राइटिंग इन 2010 2011 में मैंने लिखना शुरू किया था, ठीक है। ये जो आने शुरू हुआ 12 में आने शुरू हुआ, 1 साल लगा मुझे पब्लिकेशन स्टार्ट करने में, रिव्यू पेपर लिखने में। ये मेरा खुद सिर्फ थॉट प्रोसेस है, इट हैज नथिंग टू डू विद दैट थिंग, ठीक है। थर्ड फेज, ये रिव्यू आर्टिकल लिखते हैं, प्रोजेक्ट स्टडी आपने लिख दिया, उसको पब्लिकेशन कर दिया आपने नॉर्मल जर्नल्स के अंदर, that does not want huge studies or something. They want just some good article to come in. That's it. ठीक है। थर्ड फेज के अंदर होता है जहां आप बड़े मेजर इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स के अंदर आप भेजते हैं, जहां आपने वेक्चर बहुत बड़ी स्टडी की होती है, कुछ इम्पैक्ट कराया होता है। बट what is the issue between these three stages? In a letter to editor, it will take 2 3 5 days, 10 days, 15 days published. Review article, something like that, 20-25 दिन published. If you see my third phase, if you see जो मैंने BMJ innovation में छपवाया था, it took me 240 days from my submission. From my submission till its publication, it took 240 days. I was very patient, very patient, because it required too much time, sabar और वो उसके साथ था. So it takes time. So my request to all you who are initially starting their process of publication and think they wanted to establish themselves as the expert of that particular field, my request to you is go for a letter, go for case study. Letter तो बहुत तेजी में होता है, letter लिख दे, ठीक है। और फिर सेकंड के अंदर रिव्यू आर्टिकल्स लिखे, प्रोजेक्ट स्टडी लिख लें, जो आप अगर आप एमफिल कर रहे हैं या आप पीएचडी कर रहे हैं, छोटे जो प्रोजेक्ट आपके हॉस्पिटल में चल रहे हैं, आप उसके लिखने शुरू कर दें। इट डज नॉट नीड मोर देन 1500 वर्ड्स, उससे ज्यादा नहीं होता, उससे ज्यादा बड़ी चीजें नहीं होती। थर्ड फेज के अंदर आप थोड़ा सा ज्यादा एम्फसाइज करवा दें आप, मगर इट टेक टाइम। तो इनिशियल स्टेज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू यंगस्टर्स इज राइट लेटर, केस स्टडी, और छोटी छोटी जगह पे आप पब्लिश करना शुरू करें। It will start giving you the name. At least it will give you the name that you have some articles on. Original से major journals के ऊपर जा रहे होते हैं। Now case study, I will come back कि एक normal case study दिखाता हूँ कि मैं Lady Reading Hospital is one of the largest hospital in KPK. It has 1,700 bed hospital. Mohammed Amir joined as LRH pharmacy at the peak of COVID. अब यूजुअली अगर मैं होता हूँ, अगर मैं पब्लिकेशन ना कर रहा होता तो मैं क्लेम करूंगा कि वी हैव डन एन एक्सीलेंट वर्क इन कोविड, बट हु विल जस्टिफाई और वैलिडेट माय क्लेम एंड हाउ आई कैन डू दैट थिंग एंड हाउ कैन आई शो that yes, we have established a unit dose dispensing in a 1,700 bed hospital जो कोविड के, that is a government hospital. You can imagine it's a government hospital. It's not a private institution के जहाँ पे आप ये सब कर सकते हैं। क्लिनिकल फार्मेसी एस्टैब्लिश की थी आईसीयू कोरोना के अंदर, दिस वाज अ न्यू थिंग। यहाँ क्लिनिकल फार्मेसी का कंसेप्ट कम था, या क्लिनिकल गाइडलाइन कोविड में मैंने बनाई थी। तो दिस एटलीस्ट आई कैन से दैट मैंने ये कहा कि मैं क्लेम करता हूँ, ये मैंने किया ये सारा काम, ठीक है। तो again, it has to be documented, it has to be verified, it has to be established. First, ASHP के ऊपर एक न्यूज लेटर आया हुआ था, मैंने उस पर अंदर डाल दिया कि भाई क्लिनिकल फार्मेसी राउंड लेते हैं, कॉम्प्लेक्स रहता है, वहां पे नाम आ गया। स्मॉल थिंग, टुक मी अ डे, नॉट मोर देन दैट। एक न्यूज लेटर है, एसीएसबी का न्यूज लेटर है, उसमें एक छोटा आर्टिकल, यही आर्टिकल अगर मैं किसी बड़े पब्लिकेशन में भेजता तो it would not be accepted because the data is not so much, but I need to publish that particular one. क्लिनिकल राउंड हो रहे थे, ये हो रहे थे, टर्शियरी के हॉस्पिटल, उसके ऊपर कर रहा था, हेडिंग थोड़ा सा घुमा के लिखा था, पब्लिश पेपर, तस्वीर भी आ गई। तो अगेन easy way done. Now third part, the hardest part now, experience of compassionate use of tocilizumab in COVID patient in public tertiary care hospital in low resourceful country Pakistan. Now this is a major paper that I am looking forward.
जब मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, मैंने ERC से पहले ही से इस प्रोजेक्ट को लिखा और मैंने उसी वक्त व्हाट आई डिड, आई सेंड इट टू ERC. आई गॉट ERC अप्रूवल विद, मतलब मुझे मिल गई थी, इट टुक टाइम, बट मुझे मार्च और अप्रैल में मुझे ERC से अप्रूवल आ गई थी. पब्लिकेशन के लिए मैंने अब भेजी है, ठीक है. तो वंस यू हैव डन ऑल दोस थिंग्स, यू गेट नाउ पब्लिकेशन. तो अब देखें, इस दौरान इफ आई वुड हैव वेटेड टू फॉर द लास्ट वन, दिस एक्सपीरियंस ऑफ कंपैशनेट यूथ और ये मैं इसके ऊपर पेपर लिख रहा होता, तो it would have taken me at least 3 to 4 times larger time. तो उसमें मुझे बहुत मुश्किल हो जाती है. तो it would not have published और वो टाइम गुजर चुका होता, उसका इम्पैक्ट खत्म हो रहा होता. तो अब वो मैंने उसको तेजी में काम करवाया और जल्दी वो काम करता रहा. आई हैव टाइम नाउ टू पब्लिश दिस थिंग. इट विल टेक, अगर वो 60 दिन भी लेता है या 90 दिन भी लेगा, तो आई हैव नो इशू. आई हैव ऑलरेडी पब्लिश्ड, एस्टैब्लिश्ड माय वर्थ इन COVID-1. ठीक है. That's all. That's all from my side. Ideas are the currency of 21st one, but it has to be shared and validated also. You can connect with me with my YouTube channel in Clinical Pharmacist Life or MTP in Clinical Pharmacist Life. You're most welcome to connect with me for updates. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir, for such a wonderful talk. It will surely help us and all the pharmacists to conduct research and serve the humanity in a very good way. Pharmacist might be hectic, but the way you elaborated the steps that we can conduct research, it will surely help all the pharmacists. So now we are open for the questions. If you have any question, anyone, please unmute yourself and mute again after asking the question. So now we are open for questions, please, one by one. Assalamualaikum, sir. Sir, my question is, if you want to publish something or write a letter for editor, as you tell us, do we have to pay for that thing to that particular organization or paper? Thank you. Amir, आप mute है. Please unmute yourself. Sorry. Thank you. Sorry. Acha, very good question. Yes. देखें, we have to understand there are type of journals that is available in the market. There are open online paper जो कि अपने सारे publications they present it. You do not need to subscribe the journal. You do not need to pay for a paper. All the paper they publish is available online. Few good journals in that one, they ask for money because for administrative work and everything. कुछ journal नहीं मांगते. Again, for letter to editor, I would not recommend कि आप पे करें उसके लिए. किसी अच्छे जर्नल पे भी हो रहा है तो पे ना करें. It's a letter of editor. उसकी इतनी worthwhile नहीं हो रही होती. आप छोटे जर्नल पे, जो बहुत सारे जर्नल होते हैं जो letter to editor ऐसे ही पब्लिश कर देते हैं, आप उस पे ट्राई करें. You do not need to. There are few journals who will ask money and that money is around highly. वो डॉलर्स पे चल रहे होते हैं, 600, 1000 डॉलर्स पे चल रहे होते हैं. If you need to pay 600,000 or $1,500, it's better to publish a original journal or original paper rather than editor to journal. ठीक है. तो letter to editor, just go for small journals and small papers or small journals or very जो आपके accept कर लेते तेजी में. Go for that. I hope I have answered. Okay, sir. Thank you. Any other question? Okay, I think so. There are not any other questions. So I will request Excuse me, sir. Ms. Salwa, Assistant Chief of Pharmacy. Okay, sorry. Hello, sir. Okay, you can ask question, please. Yes, sorry. Sir, Sir, can you please suggest any topic, especially the trending one, which for which we can write an article?
Which sort of article? Letter to editor or which sort of No, our research article. a research article? Okay. Yeah. Yeah. अच्छा. mm, at this time अगर मैं जैसे देखिए there are too many information available. आप किसी चीज पे भी Mm. COVID पे आजकल Mm. easy everyone can write on COVID and get published very easily, to be honestly speaking. You can write on pharmacist perspective on COVID. You can Okay. write pharmacist perspective on tocilizumab or remdesivir or compassionate use of new drugs. You can there are many things you can write. To be honest, physician thought process, collaborative work of physician and pharmacist in COVID. So Mm. COVID के ऊपर Mm. अभी आप जो कुछ लिखेंगे ना, it's very easy to publish, to be honestly speaking. Okay. But don't publish ऐसा भी नहीं लिखे. अच्छा, my request is to everyone. अच्छा, my request to you is, I have just told you that I have only 11 publications, in my 15 to 20 years career. But again, the reason that I don't publish just because of publication. I publish Mm. because I think that it's worth reading for others. Otherwise, I will not publish any data on those things. अच्छा, लोग क्या करते हैं कि 100 150 मतलब लिखना शुरू करते हैं, 50 60. This does not make you an expert. My request to you is, as a practicing pharmacist, you need to identify your field and you have to work on that. You do not need to write 50 papers on those things. आप 4 अच्छे पेपर लिखे Mm. जो कि रीडेबल हो, जो एक्सेप्टेबल हो फार्मेसी प्रैक्टिस के प्रोफेशन के अंदर, and that is much more than 100 papers. Right. अस्सलाम वालेकुम सर, महमूद अहमद फ्रॉम MIKD कैंपस मुल्तान. सर मेरा आपने जो प्रेजेंटेशन दी है बड़ी अच्छी दी है रिसर्च पब्लिकेशन के हवाले से, कि रिसर्च की पब्लिकेशन में हमें हेल्प मिल जाती है कि क्या क्या पैटर्न्स होंगे, किस तरीके से हमने उसको अपने लिए फैसिलिटेट करना है. लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों के जहन में एक जो सवाल है वो रिसर्च की शुरुआत से हवाले से मैं जो देख रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, वो ये है कि हम रिसर्च शुरू कैसे करें. अमूमन होता ये है कि जो पैटर्न है कि हम लिटरेचर्स को रिव्यू करते हैं, लिटरेचर्स को रिव्यू करने के बाद प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद अपना रिसर्च टॉपिक करते हैं. लेकिन 90% लोग हमारे पास वो क्या कर रहे होते हैं कि अपना प्रॉब्लम पहले देख रहे होते हैं कि हमने किस हमारा टॉपिक क्या होना चाहिए, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू की तरफ जाते हैं. तो कौन सा पैटर्न बेस्ट है रिसर्च के हवाले से जिसमें हमें हेल्प मिल सके. सॉरी, आपका नाम क्या है? सॉरी, आई डिड नॉट कैच योर नेम. महमूद अहमद. Mahmood साहब, that's a good question. अच्छा, the thing that you are asking is a bit different. लेकिन जो आप मुझे बता रहे हैं ना, वो MPhil या PhD के लिए ना आपका पहला literature, when you're doing a research degree, you do this thing, you do a literature review, identify a issue, and then you go for a synopsis that particular one. अच्छा, उसमें issue भी ये आता है, हमारा जो अक्सर जो practicing pharmacist है वो academician से इसलिए थोड़ा सा नाराज रहता है कि उनके जो पब्लिकेशन होते हैं वो फार्मेसी प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट के फायदेमंद नहीं होते. My request to you is, मैं वाइस वर्सा कर रहा होता. If I see issue during my working things, for instance, मुझे medication adherence का मतलब समझ में आता था कि भाई पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं मगर adherence नहीं हो रही, तो फायदा क्या हुआ. This is where I started on those things. I started working on those particular one. मैंने आइडेंटिफाई किया कि भाई मुझे लगा, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, कि मैंने प्रैक्टिसिंग में क्या इश्यूज देखे. मुझे लगा कि क्लिनिकल फार्मेसी की डेफिनेशंस लोगों को क्लियर नहीं है, ACCP की डेफिनेशन से वो क्लियर नहीं हो पाते. मैंने उस पर पेपर लिखा. फिर आई हैड कंसर्न्स विद रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेटिक्स, एम हेल्थ के ऊपर, तो वो मैंने लिखा. तो जो आप स्टार्ट करते हैं ना, तो व्हाट यू हैव टू डू एज अ प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट, इफ यू आर वर्किंग एज अ प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट, आइडेंटिफाई समथिंग दैट इज गोइंग रॉन्ग इन योर हॉस्पिटल. आई विल गिव यू द एग्जांपल. जैसे कि हमारे एक, आई विल नॉट नेम द हॉस्पिटल, मैंने वी आइडेंटिफाइड दैट द लेविटाएसिट्राम, द डोज फॉर लेविटाएसिट्राम was prescribed in the hospital, in a complete hospital, TID. ठीक है, the usual dose is BID dose हुआ करती थी उसकी, नहीं, my apologies, उसकी डोज, हाँ नहीं, हाँ BID डोज होती थी, BID होती है, BID डोज होती है, सॉरी, मैं कंफ्यूज उस पे हो गया था. अच्छा, तो BID डोज होती थी 1500 BID का 3000 के ऊपर होता था, तो देयर वाज सम कंफ्यूजन ऑन दोस थिंग्स. तो वी डिड अ स्मॉल प्रपोजल बनाया, न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट से अप्रूव कराया, प्रोटोकॉल बेस बनाया हमने, और फिर 1 साल के बाद हमने इम्पैक्ट देखा उसको EHR के ऊपर.
और फिर उसको एक स्मॉल पब्लिकेशन के लिए एक लेटर टू एडिटर के लिए या एक ब्रीफ रिपोर्ट हमने उसके लिए तैयार की। So this is how we do. This is if you're asking for MPhil or something, it's completely different. You have to do a literature review. यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया मतलब भाई ये चल रहा है मसला, इसमें ये चीज हुई, हमने एक प्रपोजल, छोटा प्रपोजल बनाया, उस पे काम करना शुरू कर दिया। This is how we do in our side. सर बहुत शुक्रिया, क्लियर हो गया सवाल मेरा। सर एक छोटा सा सवाल और, वो ये कि मैं एमबीए कर रहा हूँ सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, बेसिकली आई एम फार्मासिस्ट। तो मैं चाह रहा हूँ कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के या जो लॉजिस्टिक के हवाले से जो इश्यूज हैं उनके ऊपर किसी टॉपिक पे काम करूँ, तो उसमें मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए हो कि मैं इंशाल्लाह पर्सनली आपसे You're रब्ता working करूँगा। in hospital, you're working in industry. सर आई एम वर्किंग इन हॉस्पिटल, मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज मैनेज बाय द इंडस You're हॉस्पिटल working in कराची। hospital ना? अच्छा, my request है, जैसे मैंने जो MBA किया था तो मैंने प्रोजेक्ट उठाया था। देखिए मेरा MBA का प्रोजेक्ट था community, how to establish a pharmaceutical care services in a community pharmacy. ये MBA का प्रोजेक्ट है मेरा और पब्लिश किया था मैंने, ठीक है। तो माय रिक्वेस्ट टू यू इज कि आप सप्लाई चेन के, हमारे पास कितने सप्लाई चेन के इश्यूज हैं और हमें, आपको और मुझे पता है कि हमें, हमारे पास इश्यूज आते हैं, क्रिटिकल आइटम है जो कि हमें अवेलेबल नहीं होती, क्रिटिकल आइटम एडली नॉन एडली जिसके प्राइसेस के इश्यूज है, यू कैन वर्क ऑन दैट थिंग। ये तो बहुत अच्छा आपके हॉस्पिटल वाइज हो जाएगा, rather than going on industry side, do it on your own hospital. This will make you an expert of supply chain in the hospital region. But if you're doing one in industry, so again you're working in a hospital and you're working on but you're proposing an idea of industry. Getting this thing? यस सर, थैंक यू फॉर सजेशन सर। ठीक है, just a suggestion. सर जी, जज़ाकल्लाह सर जी, आई गॉट इट। सर जी, जी सर, सर जी सर। सर सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जब स्टूडेंट है 3rd ईयर 4th ईयर का स्टूडेंट हो, तो वो अगर फार्मेसी प्रैक्टिस में कोई रिसर्च वगैरह करना चाहता है टीचर के साथ, तो वो किस तरह स्टार्ट करेगा? अच्छा, थर्ड, दिस इज अ वेरी गुड थिंग इन अब्रॉड टू बी ऑनेस्टली। जब हमारे पास, और खुसूसन में एमबीबीएस को जो मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं ना, यू वुड नॉट बिलीव दैट व्हेन बिफोर दे ग्रेजुएट दे डू एटलीस्ट 2-3 पेपर्स उनके ग्रेजुएशन पे हो चुके होते हैं, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है ट्रेंड। इसका तरीका देखिए, ये फिर वो, ये आप अपने कोलैबोरेट करें, यू हैव टू क्रिएट अ कोलैबोरेशन। आप अपने टीचर से बात करते हैं, वो किस चीज पे काम करना चाहता है, या अच्छा एक तरीका जो मुझे सबसे जो फीजिबल लगता है ना, वो होता है कि यू हैव टू डू वर्क, यू हैव आइडेंटिफाई द इशू, उसका एक पेज का प्रपोजल लिखे, एक पेज का, गो एंड रीड अ गूगल में लिखा हुआ है कि राइट हाउ टू राइट अ स्मॉल प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल और प्रोजेक्ट, एक पेज का प्रपोजल बनाए और फिर जाके अपने टीचर को दिखाते हैं कि सर मैं इस पे पब्लिश करना चाहता हूँ, इस पे काम करना चाहता हूँ, ठीक है, और कहीं मुझे गाइड कर दे कि मैं कहाँ से ये डाटा कलेक्ट करूँ और आपके साथ बैठ के मैं पेपर लिखना चाहता हूँ। Believe you, many of the teacher will actually help you and very happy to hear कि some 3rd year student wants to do a research. सर जी सर मैंने आपको मैसेज भी किया था सर, मैं मर्दान का हूँ, तो इलारिच हॉस्पिटल में हम कर सकते हैं इस या नहीं कर सकते? अच्छा, एलआरएच में रिसर्च, अच्छा मुझे मैसेज कब किया भाई मेरे भाई? मोहम्मद तुफैल हूँ सर। अच्छा चले, अच्छा, my apologies if I have not seen it or I have not responded for that thing. अच्छा, नहीं, LRH for if you need to do a research or for research basis and you have to be in contact with the patient, then it has to go through ERC committee also. Even if you will come to me, I will ask कि हाँ मुझे research proposal दे, मैं ERC से approval करवाऊँ उससे, ठीक है। अगर कोई छोटा मोटा है कि सर्वे बेस्ड है तो उसका इतना मसला नहीं होता, ठीक है। You have to come to one. I don't think so I would have any issue. If you are good a research person, you are good enough, I won't think so I would mind on that thing. But if you are just a time passing person for me, जो मैं honestly बता रहा हूँ, अगर मुझे लगेगा कि yes you just wanted to time pass on my one, तो मुश्किल है मेरे लिए। Bring your proposal, I will look into that. You are most welcome. सर मैं इंटरेस्टेड हूँ फार्मेसी प्रैक्टिस में, लेकिन सर ऐसा कोई है नहीं तो कोई मुझे गाइड करे। मैंने आपके साथ बहुत कांटेक्ट किया लेकिन कोई मुझे गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह ज्यादातर टीचर फार्मेसी प्रैक्टिस यूनिवर्सिटी में भी इस तरह नहीं है सर। अच्छा चले, आप send me your proposal
Send me a proposal. Yes, Let me see into that thing. If I think that's valuable for readable, is valuable and readable, and give a new information, you're most welcome. yes. Assalamu alaikum, sir. Walaikum. हेलो सर, मैं आपसे ये बात करनी थी कि जो कम्युनिटी फार्मेसीज हैं उसके ऊपर एम हेल्थ का हम काम कैसे कर सकते हैं, मींस के उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि एम हेल्थ पाकिस्तान में अगर हम देखें तो उसके कोई भी प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुए हुए, और अगर हम अपने कम्युनिटी फार्मेसी के क्या कहते हैं चेन्स को स्ट्रॉन्ग करें तो हम एम हेल्थ की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह करें, किस तरह इसको लेके चलें? May I know your name? समरा. Ms. Samra, my apologies. Your information is not up to the mark. There are many, जैसे Sahat है, there are many pharmacies who are working on M-Mobile या आपके e-health system पे काम कर रहे हैं या e-pharmacy पे काम कर रहे हैं. There are many have been doing. Even मेरा जो PhD का है, वो mobile health के ऊपर है. तो people are working on those ones, but in silos. इसलिए हम कहते हैं जब आप पेपर लिखते हैं, आप पब्लिश कराते हैं, तो आप पब्लिकेशन पढ़ें तो आपको पता चल रहा होता है. पब्लिकेशन के ऊपर से पूरी दुनिया को वो कंफर्मेशन आ रही होती है. तो माय रिक्वेस्ट टू यू इज, देयर आर मेनी पीपल हु आर वर्किंग ऑन एम हेल्थ, गेट कनेक्टेड टू देम कि हाँ भाई आप काम कर रहे हैं तो आई वांटेड टू लर्न ऑन दोस पर्टिकुलर वन. तो काइंडली आप मुझे वर्क एज ए कोलैबोरेटिव वन कि आप मुझे डाटा, अब जैसे मेरे पास कोई एक स्टूडेंट है जो मुझसे काम करना चाहती है, मेरे साथ करना चाहती है इन मेडिकेशन एडहेरेंस. शी जस्ट वांट टू कम एंड वर्क कि भाई किस तरह से काम किया जा सकता है. So just go and connect with someone who is working on ML pharmacy or community pharmacy, or start working with them. Once you will know, and then you will develop your own proposals. Okay, sir. Thank you. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. So, if you want to write a commentary article, what will be the requirement to write that? Commentary, अच्छा ये commentary article is a bit much more harder. Honestly, मुझे किसी एक बहुत बड़े प्रोफेसर ने कहा कि I do not, I'm bad in writing commentary. मुझे किसी ने कहा था, तो ever since I am afraid of that thing. Commentary, yeah, commentary is it's a bit much more tough one because commentary लिखते हैं ना तो you have to add many of the things into that thing. What is the data and it's a hard thing to do. But my request to you is if you want to write a commentary, go to academician. Academical जो university में पढ़ा रहे हो ना, they are the more feasible person for writing commentaries. Commentary is more of कि आपके पास data क्या आ रहा है, research क्या आ रहा है, research क्या कह रहा है. So this is like the thing that is coming out. So practicing pharmacist is very less likely is going to write a commentary. Okay, sir. Thank you. My apologies. I am not an expert on commentaries. No issues, sir. So shall we wind up? It was an extensive question answer session. I think so. In that, Ms. Salwa, if you want to say some words, closing remarks. Ji, sure. Thank you very much, Rehan. Amir, before I profusely thank you, मैं कुछ आपकी presentation के कुछ main points जो है summarize करना चाहती हूँ. So all the practicing pharmacists out there, मेरे ख्याल में जो the loud and clear message that comes out from the presentation is that you have to share your work in order for you to become prominent and for others to have some learning, have some information, चाहे वो उसके ऊपर build on करके उसको मज़ीद improve करें, refine करें, या at least have a first hand information कि आपके domain में हो क्या रहा है. तो वो एक कहावत है ना उर्दू की कि जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा. तो पॉइंट ये है कि हम अपने अपने साइलोज में बैठे हुए बेहतरीन काम कर रहे हैं
बहुत अच्छा एफर्ट्स कर रहे हैं, पेशेंट केयर में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एडहेरेंस में कर रहे हैं, एजुकेशन में कर रहे हैं, ट्रेनिंग में कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपको आपके अलावा देखकर क्रिटिक करने वाला और उसको उस प्रोसेस को रिफाइन करने वाला या उसको एंडोर्स करने वाला कोई नहीं है. So first and foremost thing is that you have to share your work with the world. So in order for you to get the refined content out of it, और plus ये कि लोगों को पता तो हो कि क्या हो रहा है. It's not just important for the world to know. बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि pharmacist working in a hospital doesn't know कि community में क्या हो रहा है. Community pharmacist doesn't know कि जो है academia में क्या हो रहा है. हमारे पास जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. सो व्हेन दीस काइंड ऑफ पेपर्स कम आउट, इवन वी टेंड टू नो ईच अदर विद इन आवर कंट्री कि किस तरह से हम लोग विद इन पाकिस्तान या विद इन आवर रीजन हम कैसे काम कर रहे हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि फोकस ऑन द क्वालिटी, डोंट फोकस ऑन द क्वांटिटी. डोंट गो कि जी वी हैव आई हैव 50 पब्लिकेशंस. अगर वो 50 पब्लिकेशंस जो है वो अच्छा कंटेंट नहीं है, क्वालिटी वाइज ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो डजेंट मैटर, 50 इज जस्ट अ नंबर. सो आपने क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना, क्वालिटी पे फोकस करना है. और उसके लिए ज़रूरी है कि यू हैव टू डू अ कोलैबोरेटिव वर्क, यू हैव टू इन्वॉल्व एंड गिव ड्यू क्रेडिट टू द स्टेक होल्डर्स जो कि उस प्रोसेस में ऑलरेडी और एक्चुअली आपके साथ इन्वॉल्व है. तो दैट इज समथिंग जो कि आमिर ने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया था. सो इन द एंड, Amir, I profusely thank you for this session. This is a very much needed session क्योंकि मुझे ये आइडिया इसी तरह से मिला कि आमिर को मैंने हमेशा ना सिर्फ अपनी प्रैक्टिसिंग साइड पे फील्ड में एक्सेल करते हुए देखा है, बल्कि मैंने उनको उस पूरे प्रोसेस को दुनिया से शेयर करते हुए भी देखा है कि मेरी ये पब्लिकेशन, मेरा ये रिसर्च आर्टिकल या मेरा ये लेटर टू द एडिटर. सो दिस इज समथिंग जो कि एक इम्पोर्टेंस है और हम सबको भी इसी तरह से एक्ट करना है कि वी जस्ट डोंट हैव टू प्रैक्टिस बट वी आल्सो हैव टू शेयर आवर प्रैक्टिस विद अदर्स. तो आमिर, आई एम सो मच थैंकफुल टू यू एंड आई होप कि हम फ्यूचर में मजीद भी टॉपिक्स को कवर करेंगे आपके साथ और इंशाल्लाह विल कीप इन टच. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. Thank you, Dr. Salwa. I'm grateful for this opportunity. It's being an honor to be presenting in front of you. Thank you very much. Thank you, everyone. I will take my leave then. जी जरूर. Thank you. Allah Hafiz. Take care. Allah Hafiz. ओके, थैंक यू एवरीवन. अब जो है ये मीटिंग हम एंड कर रहे हैं. प्लीज़ आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और अपने अगर कोई क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, अपना फीडबैक यहाँ पे दें. और जो सी सेशन का लिंक है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है, प्लीज़ वहाँ पे अपने कोलीग्स को भी रेफर करें ताकि हम जो है इस जो हमारी एक्टिविटी है सी सेशंस की, हम इसको मज़ीद एक्सपेंड कर सकें. ओके, थैंक यू एवरीवन. सर इस लिंक में टॉपिक जो है ना वो आज का टॉपिक आ ही नहीं रहा. सर आज का टॉपिक है इसमें. सर जी सर.